So, our bags are ready, we are ready. Let's go. Now we are heading towards our hotel in GV, which is in Tirthan Valley. Now we'll be doing one amazing thing, which is a activity when we on the way. While most of the tourists concentrate on old and new Manali when they explore Himachal Pradesh, we wanted to try something else. So we wanted to witness how the Kulu Valley actually looks and feels like in winter. We are now heading straight towards Tirthan Valley. But wait, we won't stop here until we have our adventure dreams fulfilled. From paragliding to rafting, this valley has a lot to offer. But first, let's go shopping. हेलो गाइस, अगर आप मनाली से तीर्थन वैली या कुल्लू में जा रहे हो तो रास्ते में आपको ऐसा शॉप मिलेगा. हम लोग जो शॉप के सामने अभी खड़े हैं ये है कुल्लू वेवर्स इंडस्ट्री. यहाँ पर आपको अगर ऑथेंटिक शॉल लेना है या फिर स्वेटर कुछ भी लेना है आप इधर से ले सकते हैं. ये पड़ेगा शॉप नंबर 22. यहाँ से आपको राफ्टिंग करने में भी मिलेगा और यहाँ से आप कुछ खरीद भी सकते हैं. तो चलिए अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ है, कैसा है. It's like heaven if you're really looking for some traditionally made stuff. Most of the shawls are exquisitely hand woven to deliver an unmatched luxurious feeling and much needed warmth in this chilly weather. This one is entirely made of Yakult. It's not only just soft but also provide excellent warmth, and the price only 1100 for us. This pink one is made of wool but it's completely hand woven. The asking rate is around 1100 but we got that at just 800 after a little bargaining. So here comes the real Pashmina, the pride of India. They bought it directly from Leh. Although the asking price is 3k, we sealed the deal for 2400. Now here is the authentic design of the Kulu region. It's only available in natural and traditional colors. They mainly used unprocessed yak wools to develop the particular color. So this is how the shawls are actually woven. They gave us a complete and guided tour to let us know the real craft and hand labor behind making each one of these exquisite shawls. कुल्लू वीवर्स इंडस्ट्री. हाँ. और यहाँ पे आपको हैंडमेड ही मिलेगा. हाँ. This one is completely handmade Himachali jacket. You can only get this in traditional colors and pattern. You can wear this Yakul jacket on whatever side you want. विंटर में थोड़ा होता है ना, विंटर में थोड़ा विंटर में गर्मियों डिस्काउंट का चलता है. जो आएगा अभी मौसम, उसमें हम डिस्काउंट भी देते हैं. अच्छा. 20% जो हैंडमेड होता है हमारा कुल्लू का. हाँ. ग्रंटेड होता है, हैंडमेड जो है ग्रंटेड होता है. हाँ. आप कभी भी आइए. और हमारा होटल भी है, होटल न्यू नक्षत्र एट माहौल अच्छा. नियर भुंतर एयरपोर्ट. So now it's time to gear up for the river rafting. Although it's safe to try whitewater rafting this time, it is necessary to wear safety gear like harness, helmet and all. So we are all set and ready to taste the adventure in the Bias River. My name is Ajay.
अजय जी। नेम इज व्यास, ठीक है। ओके। दूसरा जो गाइड रहेगा आपके साथ उसका नाम शुभू है, अच्छा प्यार से हम शुभू कहते हैं, अच्छा ठीक है। ये हमारी बोट रहेगी, आपके साथ टोटल दो बोट रहेंगी। ये सेफ्टी के अकॉर्डिंग जाएगी, आपके साथ आप उसमें खुद जाएंगे, ठीक है। जिसे हम चैम्बर कहते हैं। क्रॉफ्टिंग ये 3 तरह के 1 2 3 ये फ्लोर रहता है, आपने इस पर फेरना है। ये मिडल रोक रहता है, ये बाहर वाले रोक रहता है, इस तरह से होल्ड करना है, ठीक है। दोनों साइड है। यस। पर क्या होता है, इनकेस पानी आता है या फिर कुछ डर या कुछ हो जाता है, इस तरह से आ जाता है। प्लीज़ इस तरह से नहीं बैठना है, जो ये चीज़ है ना इसके ऊपर नहीं बैठना, प्रॉपर इस तरह बैठना है, ठीक है। समझ आ रहा है ना। और बीच में क्या है, आपको सेफ्टी के अकॉर्डिंग आपको एक कमांड दी जाएगी, गेट डाउन और गेट बैक। गेट डाउन में क्या करना है, आप दोनों में खाली इन दोनों को रोप को छोड़ के अपने नीज को फ्लोर पे टच करना है, इस तरह से आना, देखिए ओके। इस तरह से दोनों को पकड़ लेना है और चीन को टच करना है, माउथ क्लोज रखना है, क्योंकि यहाँ पे पानी में रॉड फिरती रहती है, मछली भी आ सकता है, ठीक है। तो जैसे ही गेट बैक बोलेंगे, क्विक अपनी सीट को होल्ड करना है, रोप को भी होल्ड करना है, ठीक है। समझ आ रहा है ना। Let's the rafting begins. So it's must try, folks. Try this and comment us below what's your experience. अब तो बिल्कुल नॉर्मल है। इन केस पलट जाता है, ऐसा नहीं है कि पलटेगा नहीं, पलटेगा कम में भी ज़्यादा में भी, जो जगह होता है बना हुआ ना हो जाता है। कहीं बाई चांस अनबैलेंस होने के कारण हो जाता है, कुछ ना कुछ इस तरह से रहता है। अभी इधर मुड़ जाए। हाँ जी। We have taken the long route for 9 kilometers. But yes, obey the command of your instructor. He is always worried to give you a safe experience. Don't get overexcited and try new things. It's also not recommended to touch the water while rafting. After experiencing whitewater rafting in River Bias, we are now heading towards Garsa. Now guys, we are going for paragliding. I'm scared right now, but I think I can able to do that. So in my life, when most of the times when I'm scared, I have done my best, and after that I got a good result. But yes, you need to sign the declaration form beforehand. It's just to certify that they are not responsible if anything happens to you. Chill, it's extremely safe and the instructor will guide you for a safe paragliding experience. So in case guys you have missed our other episodes of Himachal Pradesh series, click on the I button right now to check out the complete playlist. नीचे देखो भाई, कोई कुछ नहीं होता, इतना अच्छा दिखने को मिलता है आपको रोज रोज। मैं तो कुछ छोड़ रहा हूँ, काम छोड़ दूँ यही कर। कैसे करना है, क्या करना है, सब बता देंगे।
adventures are over for today, and now we are heading straight to the Tirthan Valley. So we pre-booked this hotel called Blue Stream Cottage in GV. The pocket pinch is on the high side, but yes, you will get an unmatched experience while staying here. From wooden interiors to luxurious washrooms, this hotel has everything to offer. And not only just luxury, but you will get all the amenities here. We hope you loving our Himachal Pradesh travel series, but we need your support, guys. Don't forget to like this video, share it with your friends, and subscribe to our channel and hit the bell button to get all the travel updates. Thank you. Thank you.